करारविन्देन पदारविन्दं मुकारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पूटेशयानम्। जय गुरुदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। Till yesterday we have already finished, the shloka, some of the difficult shloka कि असत का तो कोई सत्ता ही नहीं है और सत्य की सत्ता ही सत्ता है, उसको नहीं बुझाया जा सकता है, वो सब जगह है। लेकिन ये सत्य क्या है और ये कहाँ है? यू सी दिस प्रोग्रेशन। तो आज अगर किसी ने आपको बोला कि भगवद गीता में श्लोक नंबर 35 चैप्टर 2 में ये बोला और श्लोक नंबर 35 चैप्टर 18 में ये बोला, यू कैन से यस, वेट, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज एट वन पॉइंट आई हैव द सेम थिंग। 2 साल पहले मैंने बोला ये बच्चा तो क्रॉल करता है, और 2 साल के बाद मैंने बोला बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है। टू द सेम चाइल्ड यू हैव सेड द सेम वर्ड्स बट एट अ डिफरेंट टाइम। द टाइम इज डिफरेंट। पहले वो बच्चा क्रॉल कर रहा था, दिस वॉज ट्रू। अब वो बच्चा चल रहा है, ये भी सत्य है, लेकिन समय बदल गया है। सो इन दिस इज अ बिग प्रोग्रेशन दैट वी आर सीइंग एवरी सिंगल डे इन द भगवद गीता। टुडे वी कम टू कि ये yesterday we said the difference, no? कि असत की तो कोई सत्ता है ही नहीं और सत्य सब जगह व्याप्त है। And he says, but there is a difference between him saying in the chapter 2 and Shri Krishna saying in chapter 14, 15, 16, in which he says मैं, but here he talks very general. It's like he will see, he doesn't say about himself. He'll just say everything about God, but doesn't involve him here. But at one point after chapter 11, it is all about mama, he'll say like that. So by then Arjuna had understood that Shri Krishna is God. Today he says, Shloka number 17 in chapter 2, Avinashi tu tat viddhi येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। Very simple to understand this shloka. It says Avinashi tu tat Vidhi is basically the, like, that. So he says that Avinashi to usko jaan. Vidhi, the word, anywhere where dhi comes, that will always come as buddhi. So it will come as jaan, wherever the word dhi comes. So yes, Avinashi ko jaan, jo ye na sarva midam tatam, जो सर्वव्याप्त है, जो सब जगह है, it is all pervading, उसको जान. And then he says that विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. विनाशमव्ययस्यास्य मतलब इसका कभी विनाश ना मैं कर सकता हूँ, ना तुम कर सकते हो, ना कोई भी कर सकता है. इसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, तो उसको जान. So this is basically, like how it is like space. It's like space. There is space, उसमें एक बिल्डिंग आ जाती है तो भी स्पेस में कुछ नहीं होता है. उसमें से बिल्डिंग निकाल दो तो भी स्पेस में कुछ नहीं होता है. Nothing affects the space. It is the same. The space remains. Or you can say like it is like, when you put an ice cube inside the water,
when you put an ice cube inside the water, do you notice the ice cube is also made of water? Though the property is different, but it is made of water. The water is also water. Ice cube is also water, but you can see the ice cube floating in water. This is how it is for God. He is inside you, He is outside you, He is the Satta. He is the one who controls everything. तो उनको जान, और कोई चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है. उनको जान जो अविनाशी है, जो कभी नहीं. और यही है जीवात्मा का. आपका जीवात्मा, ये शरीर जो है, ये आएगा और जाएगा, लेकिन एक चीज़ है विच इज़ लाइक स्पेस, और उसको कोई विनाश नहीं कर पाएगा. इज़ योर ओन जीवात्मा, जिसको कभी विनाश नहीं होने वाला है. इट इज़ जस्ट गोइंग टू मूव लाइक स्पेस. इट इज़ नेवर going to end, and that is in you also. So here he says the all pervading God, the ever present God is something to know about. जिनको जान, see this is a very good word, अविनाशी तो तद विद्धि, उसको विद्धि, उसको जान. मतलब this is like how you can say is experience that अविनाशी. जानना मतलब experience, because उसको बुद्धि से जाना नहीं जा सकता है, वो एक्सपीरियंशियल है. तो एक तो विभूति योग ही आएगा, पूरा विभूति योग, उसमें भी ये बात होगी. बट जो सर्वमिदम, जो सर्वव्याप्त है, सर्वव्याप्त, और जिसका कभी विनाश नहीं किया जा सकता, और कभी ना तू कर सकता है ना मैं कर सकता हूँ. तेरे में वो एक चीज़ है जो अविनाशी है, और उसको जानना is something when you combine yourself with God, that is indestructible. So the shlok says, know that alone to be imperishable, which pervades this universe, for no one has the power to destroy this indestructible substance. So that is all for this shloka. We have to do only one shloka. This itself is something, it's like a wish. And this is like a wish, like avinashi tu tat viddhi, येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. इसको कोई नहीं मार सकता है, कोई नहीं मार सकता है, और ये विनाश कभी नहीं हो सकता है उस तत्व का. Now surprisingly, this is not just said in this, like either you believe the Vedas or you believe the Bhagavad Gita and say that Lord Krishna says. Because I know one of the question could be that really ऐसा हो सकता है क्या जान सकते हैं. But surprisingly this is also there in Ishavasa Upanishad, where he is saying whatever exists in this universe is pervaded by God. This is Ishavasa Upanishad. Then in Narayana Suktam it says Lord Narayana dwells pervading everything within and without. All that is heard of and all that is seen is the entire universe of him. This is also there in Narayana Suktam. In the Upanishad, it says all this is indeed Brahman or the Absolute. There is no diversity here. And in the Ashtavakra Gita, he says that realization of this unity will free us from sorrow. Burn this forest of ignorance with the fire of conviction that I am one and pure consciousness. Be free from sorrow. Be blissful. He says to identify yourself as this. Krishnam Vande Jagadgurum